Hello, dear students. Very warm welcome to all of you at our conceptual brainstorming integrated session of anatomy. Myself, Dr. Shrikant Verma, faculty of anatomy at this beautiful, amazing platform, Cerebellum Academy. So, we are learning the anatomy from the basics for the first MBBS students, and then we are going through the our clinical portion up to the top level. Then we are going for the our NEET PG as well as the INICT exam pattern. Fine. So please inform first that audio video everything is okay, beta. Yes, yes. Please inform that audio video everything is okay. Our today's topic is spaces of arm. Also, you can remember this is the intermuscular space at the axillary region. Also, you can say the muscular spaces at subscapular region. So these are the different name through which this question is asked in your different kind of exams. Okay. So hope audio video everything is okay. Please inform me at the chat box that all things are fine. Okay. So this is one very important diagrammatic based question for the first MBBS students, and MCQs are asked. Spaces of arm. Do you remember in our previous section? Yes, already we had discussed one quick revision for the our radial nerve. During the discussion of the radial nerve, we had seen all the our long notes as well as the short notes, these all things. So now what I want to tell you, during that description we had seen the brachial plexus quick revision also, how it is formed. Then we had observed how to draw the diagrammatic presentation for the first prof exam and for the MCQs basics. And that time we had seen the clinical os paralysis. Then we had observed the our os palsy. Then we had seen the waiter tip hand, policeman tip hand, and Klumpke's paralysis. Please go for the previous session. And after that all, we had seen the Klumpke's paralysis is equal to ulnar claw hand plus Horner syndrome. And during that all the discussion, we had seen the Gray's Anatomy 42nd edition updates, the different information we had collected. And during that time, the radial nerve course, how to draw, we had seen, how to write down during the first prof university exams, what are the different headings, how to remember in the flow chart way, what are the different tricks and mnemonics we had seen, and diagrammatic presentation also we did. During this time, I told you that this radial nerve, one quick revision, it is running in the our spaces of arm. I told it is running in the lower triangular space. So we are going through this our spaces of arm in this topic. Okay. Yes, 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 Rohan, I am doing in English, in Hindi, or any language which students are asking. Okay. So right now students are demanding for the English, so I'm coming for the English. I'm also saying in the English. Okay. Yes. Woodcutter, good evening, beta. Shivani is here, good evening. Jay Shruti Singh is here, thank you for information. Rohan is here. Yes, we will do woodcutter one by one. Okay. So now try to understand how you can remember this one. You can remember with the finger formula. तो बेटा ये जरूर याद रखना, अपने उंगलियों के जादू से आप इसको याद रख सकते हो. आपको बस उंगलियों को इस तरीके से करना है जैसे इमेज में दिख रहा है. Two fingers in that way and two fingers in another way, and just cross it. So I'm coming close to the camera and I'm showing this one. Yes, just observe, two fingers in this way and two fingers in that way. Just put in this way. Do this one. So can you see there is the formation of the quadrangle space? Can you see this green color one? It is having the quadrangle shape. So this is the quadrangular space. Yes, here you can observe there is a triangle space which is above. तो इसका क्या नाम होगा सर? ये होगा हमारा अपर ट्राइएंगुलर स्पेस. कैन यू ऑब्जर्व दिस अनदर स्पेस? कैसा दिख रहा है सर? ट्राइंगल दिख रहा है. सो दिस इज द ट्राइंगुलर स्पेस, बट वेयर सर? इट इज लोअर साइड. सो दिस इज द लोअर ट्राइंगुलर स्पेस. तो सबसे पहले बच्चों तीन चीजें याद रखनी है. पहला, देयर आर द थ्री स्पेसेस इन द आर्म. Remember, later I will teach you the spaces of the hand also. Don't get confusion. Spaces of the hand, thenar space, hypothenar space is different, and here is the spaces of the arm or the spaces of the axilla or the spaces of the subscapular space. How many spaces are there? Sir, there are the three spaces. तो बोलो बेटा तीन space कौन कौन से हैं? First is quadrangular space, next is upper triangular, and next one is lower triangular space. Hope you all are getting the point. Sir, where these spaces are formed? So
I'm going to teach you this all the things. Yes, this is the our scapula. You're looking the scapula from where? You're looking the scapula from the behind. So with the help of the three-dimensional anatomy, the beautiful anatomy, the Iron Man and Tony Stark Jarvis anatomy, which was handed over for the our Spider-Man. Spider-Man was there. Now there is the entry. There is the entry of the our, yes, Captain America in this our series. So just get ready for the Captain America for the next session. In median nerve session we will see. So just one way to make this session interesting. So what I want to tell you better, try to catch this point. Sir, there is our, yes, clavicle. Here is a scapula, correct sir? And this is the our muscles at the scapular region. So this delta shaped muscle was deltoid. Do you remember? ये सारी चीजें हमने कर ली हैं. So here, when you are looking this portion from the back side, okay sir. So can you observe this was above the spine of scapula. That's why this is known as supraspinatus. बोलो बच्चों क्या नाम होगा इसका? Supra means above, spinatus. यस, ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला के ऊपर है, इसलिए इसको सुप्रा स्पाइनेटस कहते हैं. वी आर डूइंग डाइसेक्शन ऑफ इट. ओके सर, कैन यू सी दिस अनदर मसल? सर, इट इज बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला. सो व्हाट यू विल से? सर, इट इज आवर infraspinatus. Are you liking this three-dimensional orientation? Yes sir, this is the our infraspinatus. Now just observe, sir, this is the राउंडेड मसल इन द कट सेक्शन. जब आप इस मसल को कट करते हैं तो ये गोल दिखाई देती है. सो दिस राउंडेड इज नोन एज टेरिस. दिस मसल इज स्मॉल, दैट्स व्हाई इट इज टेरिस माइनर. जस्ट बिलो टू इट हियर इज द टेरिस मेजर. और आप यहां पर एक मसल देख रहे हैं at the back of the our arm. Which muscle was there? Sir, this was the triceps. इसके पास 3 हेड थे. What were the different 3 heads? Sir, this was our long head of the triceps. It is located laterally. So this is the lateral head, and when you will cut, another head is seen which is medial to the our spiral groove. Sir, this is the medial head of the triceps. When a thin head, that's why it is our triceps muscle. So what I want to tell you, sir, among this all you can observe there are the formation of the few spaces. Sir, this is the teres minor, here is the teres major, this is our long head of the triceps, that one, and here is our humerus. So these are making the space. Can you see? Yes, beautifully you can see. Sir, the three-dimensional orientation in the our subscapular region, this space is showing quadrangle shape. दिख रहा है बेटा सबको? ओके, यस. अगर ये 3D ओरिएंटेशन समझ में आ रहा होगा तो बेटा लाइक कर दो, शेयर कर दो, इंडिया के हर एक बच्चे तक फैला दो. बेटा अगर मान लो इजी करके पढ़ना है, सिंप्लीफाइड करके पढ़ना है, बेसिक से लेकर क्लिनिकल लेवल तक पढ़ना है, मजे लेकर के पढ़ना है, तो आओ एक बढ़िया सा ग्रुप बनाते हैं और मजे लेकर के पढ़ते हैं. रास्ता भी जानते हो, चलना भी जानते हो, तुम आग हो तबीयत से जलना भी जानते हो. खुद को मोम न समझो जो झट से पिघल जाओगे, तुम सूरज हो डूब कर निकलना भी जानते हो. यस, द फर्स्ट MBBS स्टूडेंट्स, they are facing lots of the problem, as well as the NEET PG INICT students. They are saying, sir, anatomy is the most difficult, hard and volatile subject. So we are creating the too many kind of the concepts, tricks, mnemonics, the three-dimensional orientation, as well as our Avenger series. Yes, Tony Stark, Iron Man, our this all the character along with the Spider-Man. Now soon there is the our entry of the Captain America in this series. हम anatomy को interesting बना रहे हैं. Clear cut दिख रहा है sir. This is the quadrangle in shape. It is above. So what is this? This is our, yes, quadrangular space. Yes, you are right, Medbix. Also the Mirza Ghalib style. So now can you observe, sir, here one small space. Sir, this is teres minor. Here is teres major, and this is our long head of the triceps. So you can see clearly, sir, there is a one small triangle shape space is there. This upper triangular space, and also can you observe here, sir, this is our long head of the triceps. Here is the teres major, and you can observe, sir, that one is our shaft of the humerus. So one another triangular space is formed. This is lower side, इसलिए क्या बोलेंगे? Lower triangle in shape, that's what triangular, lower triangular space. Agree everybody? सबको क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा?
Okay, so what I want to tell you, sir, these are the our spaces of the arm and different structures are passing. So now we are going to create in easy way. जब आप अपने टेक्स्ट बुक को देखते हैं, हम इसको ड्रॉ भी करेंगे, कैसे हमको एग्जाम में ड्रॉ करना है. यू कैन सी सर, दिस इज अवर व्हाट, स्कैपुला. कैन यू सी, दिस इज अवर ह्यूमरस. ओके सर, can you observe this is the presentation of the which muscle, sir? It is the our teres minor. Getting the point बेटा, बहुत आसान है. फिर हम इसको ड्रॉ भी करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझो. सर, हियर इज द अवर बिग मसल teres major. ओके सर, दिस इज infraglunar tubercle. MCQ, from the infraglunar tubercle, the muscle which is taking origin, that is the long head of the triceps. So many MCQs, the teres minor osteology part, the teres major. Yes, we had seen the origin and insertion here, and here is the long head of the triceps also. Okay sir, so you can clear cut see here, sir, this is our quadrangle shape space. That's why you will say quadrangular space. ओके सर, बहुत आसान है बेटा. ओके, इसको अभी हम ड्रॉ भी करेंगे. कैन यू ऑब्जर्व सर, दिस इज अवर ट्राइंगल शेप स्पेस. यस सर, दिस इज द अपर ट्राइंगुलर स्पेस. एंड यू कैन ऑब्जर्व सर, हियर इज द अवर लोअर ट्राइंगुलर स्पेस. हमने फिर से रिवाइज किया. यस, जब हम किसी चीज को बार बार रिवाइज करते तब वो चीजें याद होती है. रिमेंबर, ऑलवेज द स्टूडेंट्स आर सेइंग द एनाटॉमी इज वेरी ड्राई, हार्ड, बोरिंग एंड वोलेटाइल सब्जेक्ट. रिमेंबर, रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्टडी. जब हम किसी चीज को बार बार रिवाइज करते हैं, बार बार रिवाइज करते हैं, तब वो हमारे दिमाग की गहराइयों में बैठ जाती है. Getting the point? So you have to remember, you have to revise again and again. Second time revision I did. So there are the how many spaces? Sir, there are the quadrangular space, 1. There is the upper triangular space, 2. There is the our lower triangular space. Agree beta? Okay, so how you will draw in the exam? Let's see. Let's start for your university prof preparation, and if you are having the solid preparation for it, definitely the NEET PG INICET questions will be cracked. Okay, so you are looking the scapula from the behind. So I told you there are the magic of the 3 for the scapula: 3 border, 3 angles, 3 process, 3 fossa. So this is the upper border, there is the medial border, and now this is the our coracoid process. Yes, and this is the glenoid cavity, and here is our lateral border of the scapula. So easy, so simple. Now try to understand at the back side. Beta पीछे क्या दिखा sir? There was the our spine of scapula which is presenting the acromion process. So this is suppose diagrammatic presentation of the acromion process. So easy, so simple. Now you all are aware, sir, there is the our scapula. So I'm just, yes, there is the our glenoid cavity which is articulating with the humerus. So I'm using the gray color for the humerus. Yes sir, this is our humerus head, and here is the our trochanter. Yes, there is our tubercle, better to say trochanter at the our femur part, and this is our, yes, humerus. So you will say tubercle. So here is our, yes, greater tubercle, and here is a surgical neck, and then there is our shaft of the humerus. So simple. इतना कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर. Now I am showing the muscles. Try to understand कैसे आपको इसको अपने दिमाग में बैठाना है ताकि आप इसे कभी ना भूलें. Sir, the teres minor. Teres minor is taking origin from the lateral border. Okay sir, from the upper area. Okay sir, so this is the teres minor muscle origin, and it is taking insertion into the our laser tubercle. Okay sir, it is taking insertion into the our greater tubercle lower impression. Do you remember? Yes, again 3-dimensional orientation. Try to understand कहाँ पर insertion होता है. Sir, this is our humerus. It is having the greater tubercle, it is having the laser tubercle. Clear? In between them there is the intertubercular sulcus. Okay sir, greater tubercle, it is having the 3 impression: upper impression, middle impression, and the lower impression on the back side. What I want to tell you, there are the 3 impression: upper, middle, and lower. Now catch this point, sir. In our scapula, sir, this is our, yes, deltoid. So there is the sits muscle, supraspinatus. Supraspinatus is taking origin above the spine of scapula. Okay, now it is taking insertion into the our what? Greater tubercle. What you have to say?
upper impression, very important for the university exams and the MCQs. For the orthopedics, clinical integration, supraspinatus tear syndrome is important. You must know the origin and insertion of the supraspinatus muscle. Agree, beta? Okay, sir. Now try to understand further. Yes, so here Piyush Saini is here. Hello, sir. Namaste from Engineering College. So, thank you. All the students who are even not the medical students, they are from the engineering and other science. They are joining the our session just to enjoy. Okay? और इसके साथ में बेटा फैमिली मेंबर्स भी इस सेशन को देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आयरन मैन आ रहा है, यहाँ पर टोनी स्टार्क आ रहा है, यहाँ पर स्पाइडरमैन आ रहा है, अब यहाँ पर कैप्टन अमेरिका आ रहे हैं. तो बेटा आप सभी जो बच्चे मेडिकल स्टूडेंट हैं उनको तो थैंक्स है ही, लेकिन वो बच्चे जो मेडिकल फील्ड के नहीं है, फैमिली मेंबर, उनको भी बहुत ज्यादा थैंक यू. वे भी इस सेशन को एंजॉय कर रहे हैं. एंड यस, इंजीनियरिंग फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द टेक्नोलॉजी, और इस टेक्नोलॉजी से ही हम अपने एनाटॉमी को और सुंदर बना रहे हैं. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू, यस थैंक यू पीयूष, थैंक यू बेटा. यस अक्षय, यू आर राइट, सिट्स मसल. सो दिस इज अवर infraspinatus. Can you see? Infraspinatus fossa, it is taking insertion into the middle impression of the greater tubercle of humerus. Again two MCQs I told you. अब देखो बेटा यहाँ पर, yes, this is your, yes, teres minor muscle. I had drawn. This teres minor muscle is taking origin from the lateral border of the scapula, and then it is taking insertion into the our greater tubercle, where remember it is taking into the our insertion into the lower impression of the greater tubercle. Okay sir. इसी तरीके से बेटा, yes, try to understand. Here is the word teres major muscle. This teres major muscle is taking origin from the again lateral border, lower part, and it is getting insertion into the humerus. Where? Do you remember? Lady between two major, हम देख चुके हैं पहले. Yes, this is the intertubercular sulcus. Lateral lip is giving insertion to the major. Which major? Pectoralis major. MCQ. Medial lip is giving insertion to the which muscle? Answer is the teres major. Yes, MCQ. In between the two major, there is the lady. Who was the lady? L for latissimus dorsi, L for lady. तो बेटा ये निमोनिक बिल्कुल याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज गो फॉर द अवर प्रीवियस वीडियो, 3-dimensional anatomy of the upper limb muscles. Okay, everyone getting the point? Yes, thank you Piyush, thank you for the shairis. Akshay saying your fan sir, thank you everyone, thank you. So yes, with this all, चलो एक शायरी हो जाए बेटा, एक छोटी सी लाइन हो जाए आप सभी लोगों के लिए. Yes, remember, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो. बेटा याद रखना, जब हम कोशिशें करते हैं, जब हम कोशिशें करते रहते हैं, तो बेटा याद रखना आसमान में भी हम सुराख कर सकते हैं, पत्थर के बीच से भी रास्ता बना सकते हैं. दशरथ मांझी को कौन नहीं जानता, जिसने पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया था. ओके, तो बिल्कुल आप कोशिशें करते हो तो आप बिल्कुल जीतते हो. और हम हमेशा बच्चों को कहते आ रहे हैं, आदमी या तो जीतता है या फिर सीखता है, आदमी हारता कभी नहीं है. आदमी हारता उसी दिन है जिस दिन वो कोशिशें करना बंद कर देता है. क्यों डरे जिंदगी से कि क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा तो कम से कम तजुर्बा होगा. तो इन्हीं लाइनों के साथ बेटा चलो आगे बढ़ते हैं. यस, दिस इज द टीरेस मेजर मसल. नाउ कैच दिस पॉइंट. ओके सर, this is our which muscle? I told you sir, this is our, yes, you can say the teres minor. Okay, now I am going to draw the teres major. Sir, teres major is taking origin from the our lower part. Okay sir, lower part of the lateral border, and then it is going towards the our what? Intertubercular sulcus, lateral lip. Okay sir, so this is our which muscle beta? Sir, it is our teres major. Simple. Your labeling should be proper. Now I am going to show the triceps muscle. Can you observe here? Sir, the triceps muscle is here. Okay, so teres minor, this is the teres major, and this is our long end of the triceps, which is coming from the our glenoid cavity, lower elevation. Infraglenoid tubercle is your answer. So what you have to remember, try to understand further. Yes, so we are going to look for this one. This is our teres, yes, long end of the triceps. So I am using little bit different color
to differentiate. Yes, sir. It is taking origin from the infraglutinal tubercle. Okay, sir. It is coming from the front side. Okay, sir. But the teres major is crossing there. So can you observe, sir? It is our long head of the triceps, which is taking origin, yes, from the infraglutinal tubercle. Agree, everybody? Got the point? Okay. So now we are going to look for the next. Yes, Dr. Pradeep is here. Hello, sir. Good evening. How are you? From Switzerland. Thank you, sir. So thank you, everybody. Students across the world, not only from the India, all the state, but also the students joining from the Nepal, Bangladesh, Pakistan, Ukraine, Russia, yes, Kyrgyzstan, Kazakhstan, and right now the Pradeep is saying he is from the Switzerland. He is watching the videos from the Switzerland. Thank you, everybody. Thank you for your beautiful response. So okay, sir, this is our third muscle. Important, you can label. बेटा साथ में डायग्राम बनाते चलो, आराम से प्यार से लर्न करो. This is our what, sir? It is the long head of what, sir? Triceps. Okay, sir. So these are our three muscles. Okay. Now catch here. What are the different space? आप इसे देख रहे बेटा, दिस इज द अपर क्वाड्रेंगुलर, दिस इज द अपर ट्रायंगुलर एंड हियर इज द लोअर ट्रायंगुलर. यस सर. सो यू कैन ऑब्जर्व क्लियरली, sir, upper quadrangular, upper triangular and lower triangular. So I am mentioning here the three spaces. Yes. So what are our different three spaces? Sir, there is our first quadrangular space. Can you observe this another one? Yes, sir. Here is second space. You can remember, sir, it is our upper triangular in shape. That's why upper triangular space. Okay, sir. And you can observe this another space. Sir, this is lower side. So you will say lower. Yes, it is triangle. That's why you will say triangular space. So very easily you can remember these spaces. Magic of three. Sir, the spaces of the arm, you can remember the magic of three. How? Sir, there are the our three muscles. Correct, sir. 1, 2, 3. And there are the three spaces. Yes, you can see the first, second, third. So beautiful. Yes, so elegant, so beautiful, just looking like a wow. Okay. कौन कहता है कि एनाटॉमी ड्राई, हार्ड, बोरिंग, वोलेटाइल है? आराम से पढ़ो, प्यार से पढ़ो बेटा, मोहब्बत दे करके पढ़नी है. ओके. हमने आज तक एनाटॉमी से मोहब्बत की ही नहीं, तो इसलिए एनाटॉमी हमको ड्राई लगता था. एक बार प्यार करके तो देखो इसे, ये बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट देगा, ये आपसे उतनी ज्यादा मोहब्बत करेगा. गेटिंग द पॉइंट बेटा? ओके. सो दिस इज आवर मैजिक ऑफ थ्री. Okay, sir. So now try to catch these points further. What are the different borders? Okay, so we are going to look for the boundaries of the space. चलो, जो दिख रहा है वो बोलना है. Okay, so what I'm going to do for all of you, yes, we are going to see the boundaries. तो इसको मैंने लिया और इसको कॉपी पेस्ट किया. Okay, I'm not going to draw exact the diagram, same to save the time, but now can you see the boundaries? Okay, so just tell me what are the boundaries? Sir, this is our quadrangular space. इसकी हम बाउंड्री देख रहे हैं. So can you tell me the superior boundary is formed by, tell me इस मसल का क्या नाम है बेटा? Sir, this is the our teres minor. Okay, sir. Can you tell me what is the name of the below muscle? Sir, this is the our teres major. Yes. Can you tell me the pink color? Sir, this is our triceps. Which head? Sir, this is long head. And this is our what? This is our humerus. So quadrangular space जो दिख रहा है वो बोलना है. The upper border is formed by teres minor. Okay, sir. Sir, lower border is formed by teres major. Correct, sir. Sir,
medial border is formed by sir long head of the triceps, जो दिख रहा है वो बोलना है sir. Lateral border is formed by what sir? Lateral border is formed by this humerus. Which part sir? Surgical neck of the humerus. So beautiful, no need to mug up. अब चलो और थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड करते हैं, टेक्स्ट बुक के लैंग्वेज समझते हैं. व्हेन यू विल लर्न द टेक्स्ट बुक यू विल सी द our quadrangular space. Upper border is formed by teres minor. Can you tell me which border? Upper border of the teres minor or the lower border of the teres minor? Answer is lower border of the teres minor. So I am writing here the quadrangular space, its boundaries. Okay sir, so I am writing here the boundaries. Yes, there are the boundaries, quadrangular space. So you will say sir it is having the upper border, it is having the lower border, it is having the medial border and it is having the lateral border. कुछ याद करना है क्या? अभी तो कुछ रटना पड़ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, आराम से समझो, प्यार से समझो. ओके ओके सर, अपर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर एंड लैटरल बॉर्डर. ओके सो जस्ट टेल मी द अपर बॉर्डर इज फॉर्म बाय teres minor. Which part? Upper border or lower border? Answer is the lower border of the teres minor. So you will say sir it is formed by the teres minor. Better to say lower border. Okay, but a few more additional points from your Gray's anatomy, from the BD Chaurasia sir, from the Vishram Singh anatomy sir, try to understand. When you will observe on the front, yes, 3D anatomy beta, try to catch. Yes, try to look, observe this one sir. Here is our another point. Okay, so here is one another very beautiful comment by the our student प्रिंसेस सोनी ऑफिशियल. नमस्ते सर, मैं आपकी क्लास ब्रेकियल प्लेक्सस खत्म करके आया हूं ऐप में, अब ये इंटरेस्ट आ रहा है, रिवीजन करने लग गया. लव फ्रॉम द साइबेरिया. सो द स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग फ्रॉम द साइबेरिया also. So thank you beta, thank you for such beautiful lines, for such beautiful comments. Okay, so now we are going to look for the next. Okay, so try to understand. Here is the our muscle supraspinatus, infraspinatus. This was our teres minor, but when you are removing, yes, do you remember upper quadrangular space? That is the our quadrangular space. Upper bond is formed by teres minor, but when you will cut, can you see the upper bond is formed by this muscle also? This is nothing sir, it is the muscle which is taking origin from the subscapulary space. So this is the subscapularis, so it is also participating in the boundary. और साथ में जब बेटा आप ऊपर देखोगे, so this is your shoulder joint. Shoulder joint is enclosed by the capsule. So remember, here is a capsule of the shoulder joint also. So what I want to tell you, sir, try to understand, try to catch this beautiful point again. Sir, along with this teres minor, there is also presence of subscapularis. Also there is the our, yes, capsule of what? Shoulder joint. ओके तो समझ में आ रहा है टेक्स्ट बुक में ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ओके सर, नाउ द लोअर बाउंड्री इज फॉर्म बाय द विच मसल? teres major. Yes sir, this is the quadrangular space. The lower boundary is formed by teres major. Now again, this teres major is having the two borders, upper border, lower border. Sir, the lower boundary is formed by the upper border of the teres major muscle. What you will say? Sir, the lower border is formed by what? Answer is the teres major. Which border बेटा? Remember, answer is upper border. सबको समझ में आया बेटा? फाइन, चलो आगे हम देखते हैं. सर, द lateral bond is formed by humerus. Which portion? Sir, it is our neck of the humerus, surgical neck of the humerus. So remember, the lateral border is formed by, आसान तरीके से बेटा ह्यूमरस बस याद रखो. Okay, but if you want to get more marks, then you will say, sir, surgical neck of the humerus. Okay sir, now look for the quadrangular space. Sir, this is the medial boundary. This medial boundary is formed by
triceps long head. Okay, this triceps muscle is having the two border. This is your lateral border and here is your medial border. So what you will say? Answer is lateral border of the long head of the triceps. बेटा सिर्फ triceps लिखते हो तो भी चलेगा. Yes, triceps. Which head? Answer is long head. But if you want to get extra, then you have to do extra. Yes, no pain, no gain. जिंदगी में अगर कुछ एक्स्ट्रा पाना है तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा तो करना पड़ेगा. इस दुनिया में मुफ्त में कोई भी चीज नहीं मिलती, हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी. तो जिस बच्चे ने लिखा क्या सर लैटरल बॉर्डर, यस, ऑफ द अवर लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, then he will get better answer क्योंकि बेटा ये lateral border ये medial border है. Agree? Okay, fine. So now what I want to tell you, yes. So thank you everybody, thank you everyone. So make the interesting all the things. Yes, do the comments. Okay, my emojis, my heart, my namaste, my all kind of expression for all of you. So beautiful comment from the Siberia students, from the Switzerland students, from the Nepal, Pakistan, Bangladesh, all students. Okay, thank you everybody. So what I want to tell you, sir, this is our quadrangular space. फाइन बेटा, गेटिंग द पॉइंट. ओके, तो इस तरीके से हमने क्वाड्रेंगुलर स्पेस की पूरी बाउंड्री लिख ली. चलो अब आप मेरे को बता सकते हो क्या, व्हाट आर द डिफरेंट बाउंड्रीज ऑफ द यस अपर triangular space. Sir, it is triangle, so you will say it is having the yes upper border, it is having the lower border and it is having the lateral border. तो बेटा ये triangle दिख रहा है. Yes, you will mention there are the three borders. What are the different three border? Sir, upper border, sir, lower border, and sir there is our what lateral border. Agree everyone? Okay, चलो जो दिख रहा है वो बोलना है. एनाटॉमी एक बहुत ही सीधा साधा प्यारा सब्जेक्ट बेटा. जो दिखता है वो एनाटॉमी है, जो नहीं दिखता है वो फिजियोलॉजी है. और जब इस एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में गड़बड़ी हो जाती है तो बेटा आपका मेडिसिन, सर्जरी, पीडिया, ऑब्स गायनी ऐसे क्लिनिकल सब्जेक्ट बनते हैं. ओके सर, upper border is formed by, tell me beta, the upper border of this triangular space is formed by what? Answer is teres minor. अब बेटा ये बताओ teres minor की कितनी border? सर, this teres minor is having the upper border and lower border. The upper border of the triangular space is formed by, आराम से सुनो, by lower border of teres minor or upper border of the teres minor. Definitely you will say lower border of teres minor. Getting the point? Okay, yes. Ahmed, remember beta, it is not the concise class. It is not the concise class. If you want the concise class, go for the bullet train anatomy where within the 7 hours 30 minutes we completed entire the anatomy. Okay, Ahmed, ये बेटा फर्स्ट MBBS से लेकर के सारे क्लिनिकल सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करते हुए पूरे AIIMS सब चीजों को ये फोकस कर रहा है. अगर आप सिर्फ AIIMS नीट पीजी के लिए पढ़ाना चाहते हो तो बेटा प्लीज गो, माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज गो फॉर द बुलेट ट्रेन एनाटॉमी जिसमें हमने सिर्फ 7.5 घंटे में पूरी चीजों को कवर किया है. होप अहमद यू आर गेटिंग द पॉइंट बेटा. ओके, इट इज नॉट द कंसाइज क्लास. अगर आप कंसाइज क्लास चाहते हो गो फॉर द बुलेट ट्रेन एनाटॉमी. इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट. इट इज डिटेल क्लास स्पेशली फॉर द फर्स्ट MBBS स्टूडेंट्स टू द टॉप क्लिनिकल लेवल टू द AIIMS एंड द नीट पीजी. लेकिन बेटा स्टार्ट तो हम बेसिक से करेंगे क्योंकि ये बेसिक्स स्ट्रांग करने के लिए. और कभी भी किसी बिल्डिंग की बेसिक्स जो है वो धीरे 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 ही बनती नहीं. ऐसा नहीं होता कि बिल्डिंग एकदम धाड़ से बन गई. ओके, सो दिस इज द थिंग. नाउ व्हाट आई वांट टू टेल यू बेटा, सर अपर ट्रायंगुलर स्पेस इट इज हैविंग द अवर border. What I told you, sir, this is our, yes, this is our lower, okay sir, border of what? Sir, lower border of the teres minor.
Okay, everything is MCQ. So here is another where we can find the 3D anatomy to revise better at the Cerebellum Academy YouTube channel. Here we are doing all the things. Okay, so stay tuned. Okay, Niharika, hope you all are getting the point. Lower border की बात करते हैं सर. Lower border of this space is formed by teres major. चलो बेटा बताओ, the teres major upper border or the lower border? Sir, this upper border is making the boundary. So what is the best answer? Definitely you will say the teres major. But which border? Sir, answer is the upper border. सबको समझ में आ रहा है? बहुत आसान है. Now tell me the lateral boundary. Yes sir, the lateral boundary is formed by what? Sir, laterally there is the long of the triceps. यस, विच बाउंड्री? बेटा ये मीडियल बॉर्डर है, ये लैटरल बॉर्डर है. सर, दिस बाउंड्री इज फॉर्म बाय द मीडियल बॉर्डर, not by the lateral border. Medial border of the long head of the triceps. So what you will say? Sir, lateral border is formed by definitely long head of triceps. ये जिसने लिख दिया उसको नंबर मिल गया. But if you have to get extra, you have to do extra. So you have to write down, sir, this is formed by the medial border of the long head of the triceps. So many MCQs we covered here. Now we are looking about the our lower triangular space. चलो बेटा, तो अब हम बात करते हैं अपने लोअर ट्रायंगुलर स्पेस की. ओके सर, अपर ट्रायंगुलर स्पेस वी हैड कंप्लीटेड. नाउ हियर वी आर गोइंग टू लुक फॉर द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस, द ब्यूटीफुल एनाटॉमी. हियर वी आर drawing for all of you. Sir, quadrangular space boundaries we had completed. We had completed the our upper triangular space. We had completed. Now we are going to complete the lower triangular space. Agree everybody? Fine. Okay sir, so what are the boundaries? Can you observe? This is the lower triangular. So this upper border is formed by teres major. Yes, write down lower triangular space, its boundaries we are mentioning. Sir, it is having the upper border, it is having the lateral border. Yes sir, I am showing in the image lateral border. And here is your what? Sir, here is our medial border also. So this is your medial border. Getting the point? Sir, there is the upper border, lateral border, medial border. Three borders in the lower triangular space. Okay, now the upper border. Sir, upper border is created, the upper border is created by the teres major muscle. Which part? Lower border of the teres major. So you have to remember the teres major. What? Sir, this is the our lower border. teres major muscle का कौन सा lower border जो है वो क्या बना रहा है? It is making the lower triangular space. कौन सा बॉर्डर बेटा? अपर बॉर्डर. सबको समझ में आ रहा है बेटा? नाउ द लोअर बॉर्डर, यस, लैटरल बॉर्डर. लैटरल बॉर्डर कहां है? सर, दिस इज द लैटरल साइड. इट इज फॉर्म बाय द अवर ह्यूमरस. सो यू कैन रिमेंबर द shaft of, yes, humerus. Simple. Okay, now the medial boundary. Can you see the medial boundary? Medial boundary is formed by our long head of the triceps. Yes, it is having the lateral border, it is having the medial border. कौन बना रहा है? सर, lateral border of long head of triceps muscle. Simple. आराम से बेटा, जो दिख रहा है वो चीजें आपको मेंशन करनी है. सर, द मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय, ओके, यस सर, मीडियल बॉर्डर इज फॉर्म बाय अवर लॉन्ग हेड ऑफ व्हाट? ट्राइसेप्स. बट इफ यू वांट टू गेट एक्स्ट्रा, यू हैव टू डू एक्स्ट्रा. तो इसमें क्या बताना है? सर, द लॉन्ग हेड ऑफ द ट्राइसेप्स, इट इज हैविंग द टू बॉर्डर, द lateral border is participating here. So these are the different boundaries of the lower triangular space. Agree everyone? Fine. चलो, तो अब हम देखते हैं इसके कंटेंट देखते हैं. ओके, सो नाउ अगेन दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. लुक हियर बेटा, यहां पर ये क्या है? सर, इट इज अवर एक्सिला पार्ट. सो दिस इज द पोस्टीरियर व्यू. यस,
ये क्या है आपका क्वाड्रेंगुलर स्पेस। तो इस क्वाड्रेंगुलर स्पेस में आपको क्या दिख रहा है सर, हियर इज अवर एक्सिलरी नर्व। ओके सर, along with the axillary nerve there is the one artery। yes, ये आर्टरी पीछे से आ रही है और सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस में वाइंड कर रही है। क्या नाम होगा सर, दिस द पोस्टीरियर, पीछे है, घूम के जा रही है, दैट्स सर्कमफ्लेक्स। ह्यूमरस से रिलेटेड है, दैट्स ह्यूमरल आर्टरी। सर दिस द posterior circumflex humeral artery and surgical neck of the humerus is related with the axillary nerve। so this is the content of the our upper quadrangular space। so simple। एक बेटा आपको क्लासिकल एमसीक्यू आता है सर, एक्सिलरी नर्व इज गिविंग नर्व टू टीरिस माइनर मसल विच इज प्रेजेंटिंग द स्यूडो गैंग्लियन। ये जो स्यूडो गैंग्लियन होता है ये मैं आपको न्यूरो एनाटॉमी में पढ़ाऊंगा, बट रिमेंबर दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, द स्यूडो गैंग्लियन। ओके सर, नाउ लुक हियर सर, दिस इज अवर अपर ट्रायंगुलर स्पेस, यहां से एक आर्टरी जाती है, दिस इज योर विच आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। इकलौती कंटेंट है अपर ट्रायंगुलर स्पेस में। और मैंने आपको रेडियल नर्व में पढ़ाया था, रेडियल नर्व it is running in our spiral groove, please watch the previous video, it's running in our radial groove, correct sir। so within the radial groove the nerve is radial nerve। तो बेटा यहाँ का कंटेंट कोई और नहीं है, हमारा रेडियल नर्व है, एंड वन आर्टरी इज रनिंग क्लोज टू द ह्यूमरस, ये डीप में है, इसलिए इसको बेटा हम क्या बोलेंगे, प्रोफंडा। प्रोफंडा मींस डीप। ये हमारे ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांच है, दैट्स व्हाई प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। एग्री एवरीबॉडी, सबको समझ में आ रहा है बेटा? आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, जल्दबाजी और हड़बड़ी करोगे बेटा तो एनाटॉमी भूल जाएंगे। ओके ओके सर, सो नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन फॉर ऑल ऑफ यू। यस सर, सो अगेन हियर द सेम इमेज जो हमने पहले ड्रॉ किया था उसको हमने यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया। ओके सर, सो व्हाट आर द डिफरेंट कंटेंट्स, सो जस्ट ऑब्जर्व in the our upper quadrangular space sir, there is the one artery। चलो बताओ बेटा, ये आर्टरी पीछे से गई, घूम के गई, क्या नाम देंगे, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। यस सर, इट इज अवर व्हाट, यू विल से सर दिस इज बिहाइंड, दैट्स व्हाई पोस्टीरियर, घूम के जाती है, दैट्स व्हाई यू विल से सर्कमफ्लेक्स। बेटा ये कहाँ है, ह्यूमरस में है, दैट्स व्हाई ह्यूमरल। और बेटा ये आर्टरी है तो आप इसे क्या कहेंगे, आर्टरी। दिस इज द PCHA, पच्छा यू कैन से इन फनी वे। ओके सर, कौन सी नर्व नजर आई थी सर, हियर वाज द अवर विच नर्व, axillary nerve। so here is our axillary nerve, this axillary nerve was giving one branch to the teres minor। yes, तो बेटा इससे हमने एक ब्रांच निकाली और टीरिस माइनर को दे दी, और इसमें बेटा एक हमने स्यूडो गैंग्लियन भी प्रेजेंट किया था, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द कंटेंट्स, सो आई एम मेंशनिंग हियर दिस अनदर स्ट्रक्चर सर, दिस इज आवर एक्सिलरी nerve, very very important question। so remember these are the contents of the quadrangular space। याद रहेगा बेटा, बिल्कुल भूलने वाली बात नहीं है। सो दीज आर द कंटेंट्स। ओके, दो कंटेंट आपको याद रखने हैं। यस, वेरी ब्यूटिफुली यू कैन रिमेंबर। यस, वी आर मेकिंग द डायग्राम फॉर द कंटेंट्स। ओके बेटा, now try to understand, there is our artery। yes, which artery is here sir, there is our circumflex scapular artery। okay, so there is the one artery, circumflex scapular artery, which is the content of this portion। remember this circumflex scapular artery, it is coming in between the head of the our teres minor also। okay, so you can remember sir, this is our another content sir, it is circumflex scapular artery। yes, it is the content of which space, upper triangular space। एक ही कंटेंट, डेफिनेटली जहां आर्टरी बेटा वहां वेन होती है, तो यहां पर आपका वेन भी मिलेगा। ओके सर, सो सिंपल। अब हम इसको भूलेंगे नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस बस हमको करनी है। नाउ व्हाट इज द कंटेंट ऑफ द लोअर ट्रायंगुलर स्पेस सर, वी हैड सीन देयर इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंटेंट, दैट इज आवर रेडियल नर्व। तो बेटा आपको यहाँ पर क्या करना है, स्पाइरल ग्रूव में रेडियल नर्व बनाना है। along with it there is the one artery, which artery, yes, a deep branch of the brachial artery, that is a profunda brachii artery।
Profunda means deep. Okay, so this is our what? Profunda brachii artery, and here is the our nerve. Which nerve beta? Sir, this is our what? Radial nerve. These are content of which space? Answer is lower triangular space. Yes sir, lower triangular space. Agree? Fine. ओके सर, सो दीज आर द पॉइंट्स विच यू मस्ट रिमेंबर. तो बेटा ये हमने कंटेंट के लिए एक बढ़िया सा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया. फाइन. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट क्लिनिकल पॉइंट्स. तो चलो भाई हम क्लिनिकल करते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द टुडे सेशन. बढ़िया सा प्यारा सा सेशन है, छोटा सा सेशन है. सो यू हैव टू रिमेंबर द क्लिनिकल. यस, these are very important to identify the different structures during surgery. Okay, it helps to identify many important structures during surgery. Now try to understand. Sir, here is the axillary nerve, correct sir? So the axillary nerve, it can be damaged here. Okay, so what I want to tell you, the clinical point in this separate slide. Yes बेटा, ये चीजें आपको एग्जाम में पॉइंट वाइज लिखनी है. एक्सिलरी नर्व, इट कैन गेट डैमेज एट दिस पार्ट. सर्जरी कर रहे हैं, चीजों को पहचान नहीं पाए, ये कट गए, डैमेज हो गए, तो प्रॉब्लम. एक्सिलरी नर्व सप्लाइज द टू मसल. विच मसल? डेल्टॉइड एंड टेरिस माइनर. यस बेटा, डेल्टॉइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राउंडेड कंटूर ऑफ द शोल्डर. तो अगर मान लो डेल्टॉइड में डैमेज हुआ तो क्या क्या चीजें मिलती है? लॉस ऑफ, this is the MCQ of the recent NEET PG INICT exam also beta. There was the patient with the COVID, intramuscular injection was given at the our shoulder area, and there is loss of the rounded contour of the shoulder. Which structure is involved? आंसर क्या था आपका? डेल्टॉइड. तो बेटा अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो चाहे नीट पीजी हो, चाहे आईएनआईसीटी हो, चाहे एफएमजी हो, चाहे यूएसएमएलई हो, चाहे प्लेब हो, हर एग्जाम आप क्रैक करेंगे. सो लॉस ऑफ राउंडेड contour of what? Answer is the shoulder joint. Agree? Now catch this another point. Yes, deltoid is responsible for the abduction. So there is the our loss of abduction. Yes, remember पहले का concept क्या था? Yes, 15 to our 90 degree, but recent concept is saying the 0 to 90 degree abduction is lost. Okay, तो आपको इसको फॉलो करना है. टेरिस माइनर, मैंने आपको आउस पैरालिसिस बताया था, इट इज लैटरल रोटेटर. सो इफ देयर इज द पैरालिसिस ऑफ द टेरिस माइनर, देन पेशेंट विल प्रेजेंट विद द मीडियल रोटेशन. यस, सो देयर इज द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म. दिस इज द MCQ. दिस इज नथिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ द पोलिसमैन टिप हैंड. ओके सर, सो एक्सिल नर्व कैन बी डैमेज. ओके, और अगला इंपॉर्टेंट क्लिनिकल हम देखते हैं. सर, एट दिस लोअर ट्रायंगुलर स्पेस देयर इज अ डैमेज चांसेस ऑफ द आवर रेडियल नर्व. तो बेटा अगला जो इंपॉर्टेंट चीज है सर, देयर इज द डैमेज ऑफ द व्हाट? रेडियल नर्व. तो ये तो हमने पिछले क्लास में देखा है. प्लीज वॉच अवर प्रीवियस वीडियो. बोलो बेटा, अगर रेडियल नर्व में डैमेज हुआ तो क्या क्या सिम्टम थे? सर, फर्स्ट, there is the chances of the our yes high radial nerve paralysis, so that is presenting with the crutch paralysis. Yes, if within the spiral groove, then there is a presentation of the our what? Saturday night palsy. Yes, there is a loss of extension of the elbow, loss of extension of the wrist. If loss of extension of the wrist, then there is the wrist drop. So what you will write down? Sir, there is the presentation of the our what? Sir, the wrist drop. Yes, याद करो बेटा, ये हम देख चुके हैं. Also the patient is not able to extend the finger. तो बेटा फिंगर एक्सटेंड नहीं होगा, फिंगर नीचे चला जाएगा. So you can remember there is the our finger drop. और इसी तरीके से ये जो रेडियल नर्व था वो सेंसेशन दे रहा था कहाँ? डॉर्सम ऑफ द हैंड में, लैटरल 2.5. कुछ बुक्स जो है लैटरल 3.5 भी कह रहे थे. सो रिमेंबर देयर इज द लॉस ऑफ sensation on lateral
2.5. Few books are mentioning the lateral 3.5. Where? Yes, on dorsum of the hand. ओके तो ये कुछ मेन फीचर हैं। तो इस तरीके से हमने अपने क्लिनिकल पॉइंट्स को भी इन्वॉल्व किया बेटा। यस, दीज ऑल आर योर डिफरेंट एमसीक्यूज। ओके, होप यू ऑल आर गेटिंग द पॉइंट। सो एट द लास्ट ऑफ द सेशन, रिमेंबर, some may have more talent than you, but there is no excuse for anyone working harder than you. रिमेंबर बेटा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टैलेंटेड हैं। इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, यस, जो आपसे आगे हैं, लेकिन उनके टैलेंट को काटा जा सकता है। कैसे? आंसर है बेटा हार्ड वर्क। आपको कठिन मेहनत करनी है। अगर कोई 2 घंटे पढ़ करके अपनी चीजों को कंप्लीट कर लेता है, गॉड गिफ्टेड है। ओके, हमारे पास वो चीज नहीं है। तो बेटा आप 4 घंटे पढ़ो, आप 6 घंटे पढ़ो, लेकिन आप इस हार्ड वर्क के थ्रू उसको टक्कर दे सकते हैं और ये हार्ड वर्क को अपनी हैबिट बना लेना है। Getting the point? Okay, so this was our beautiful session for all of you. Thank you everybody. Please ask if in doubt. This is all the things about our today's session. If in doubt, please ask beta. Yes, welcome Priyadarshini. Yes, Sindhu Sagar. Perfect. चलो इसी बात पर हम आपको एक और चीज बताना चाहते हैं बेटा। याद रखना, आज की दुनिया में, यस, देखो एक जमाना था जब टैलेंट को पूछा जाता था, जो टैलेंटेड होता था वो आगे बढ़ता था। ओके, लेकिन बेटा याद रखना, आज के जमाने में हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई टैलेंटेड है। ओके, हर कोई टैलेंटेड है आजकल। एक समय होता था कि जो हार्ड वर्कर है वो लाइफ में आगे बढ़ता था। यस, ये फॉर्मूला पुराना हो गया कि यार कोई टैलेंटेड है तो हार्ड वर्क करो और उसको पीछे कर दो। तो बेटा आज के जमाने में हर कोई हार्ड वर्कर है। हर कोई सवेरे सवेरे उठ करके पढ़ सकता है, हर कोई रात को जाग जाग के पढ़ सकता है, हर कोई एक बार ठान ले तो उन चीजों को कर सकता है। अब बेटा क्या है कि हर कोई टैलेंटेड है, हर कोई हार्ड वर्कर है। तो अब आपको क्या करना है कि अगर मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आती तो उसको छोड़ना नहीं है। तो आज के डेट में बेटा एवरीबडी इज टैलेंटेड, everyone is hard worker, so remember who will go ahead if anyone is getting opportunity, and if he is missing that opportunity, so he will go backside. But if you are having the opportunity, yes, don't lose that opportunity, do hard work and show them your talent. Definitely you will be winner. Okay, so thank you very much, god bless you all. If any doubt, please ask. Yes, please ask if any doubt beta. Okay, okay, welcome everyone, welcome Sindhu Sagar. So thank you all everyone for your response. Okay, so this is all the things for the today's session. Thank you very much. If any doubt, you can ask. Stay tuned with my Insta channel, my YouTube channel, with the Cerebellum Academy YouTube channel, and any doubt you can ask here. So we will meet in our next session with the median nerve, and in this median nerve session we will see the mnemonic कैप्टन अमेरिका जो थे वो बैचलर इन फिजियोथेरेपी थे। यस, वी विल सी द कार्पल टनल सिंड्रोम, द एप्थम डिफॉर्मिटी, द पॉइंटिंग इंडेक्स, द बेनेडिक्ट हैंड डिफॉर्मिटी, द फैलेंस टेस्ट, द टिनल टेस्ट। तो ये सारी चीजें आएगी और इस तरीके से अब हमारे इस सेशन में एंट्री होने जा रही है कैप्टन अमेरिका की। आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक दिस ऑल द थिंग्स so beautiful and interesting so that you can enjoy the session. So stay tuned for our next session, the Captain America session. Thank you everyone, god bless you all, stay tuned, all the best.